थैंक यू गीता दीदी। मैं वीडियो देखने लग गई दूसरे वाले फोन से। मेरा खत्म हुआ, आपका आ गया, आपका चल रहा था। ये दूसरे वाले आईडी से ये देखी हूँ। चलो अब ऑन करके रखते रही हूँ, जो आएगा आएगा, हम भी अपना काम करें। बताओ 1 बज गए, कुछ काम नहीं हुआ, अभी हमें सुनाएंगे सब। वाला फ़ोन लगा दो चार्जिंग में, दूसरे वाले में देखूंगी कोई आएगा तो।
अच्छा दीदी, ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। अपना ऐड खोली हो कि नहीं दीदी, जो गाना डाली हो? दीदी ऐड कहाँ से खुलता है? ऐड तो खुला रहता है, खाली डॉलर खोले हैं। गीता दीदी वही डॉलर खोले हैं जहाँ से डॉलर खुलता है। गाना तो मेरे कल भी, हाँ आया नहीं आया, पता नहीं। ऐड अलग से खोलना पड़ता है का? हाँ वही दीदी, वही। हाँ वही दीदी, वही। हाँ डॉलर जो खोलते हैं ना, उसे खोला है। हाँ वही दीदी वाले को उठा था। थैंक यू गीता दीदी, ओ सुनीता दीदी। वही जो डॉलर खुलता है वही खोली थी।
ये हमारे फोन में ऐड नहीं आ रहा।
ठीक है सुनीता दीदी।
राधे राधे भी के भैया। हो ठीक है भैया, ठीक है। 3 फ़ोन लगे हैं। अरे नहीं दीदी, सो नहीं रही हूँ। ठीक है बी के भैया, 3 फ़ोन रखे लगे हैं। ये दो लाइट कितने बोली है?
हाँ सुनीता दीदी, हम जग ही रहे हैं दीदी, सो नहीं रहे हैं। जब सो रही थी तब नीता दीदी ने फोन करके जगा दिया। जब वाईफाई नहीं चल रहा था तो मैंने कहा चलो सो आराम से। इसे सपोर्ट ही नहीं कर मिलेगा, फिर आके सोने लग गई मैं। नमस्ते अनूप भैया, खुश रहो। आपके यहाँ आलू गोभी टमाटर जो भी जितना सस्ता हो ना भैया, पार्सल कर दो। हाँ अनूप भैया, जितना चीज हो सब पार्सल कर दो। हाँ हो दीदी, ठीक है भैया, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत महंगा है। अनूप भैया, बर्तन धोने जा रही हूँ, धुलवा लो। आज हमारा बर्तन पड़ा है, वाईफाई बंद था तब भी सारा काम पड़ा रहेगा। सब काम हो गया लेकिन बर्तन धोना पड़ा ही रहेगा। अब पहले बर्तन धोने। 20 रुपया फूल गोभी है, 10 रुपया किलो। अरे भैया, गांव में फूल के हिसाब से मिलता है, यहाँ किलो के हिसाब से मिलता है। डंठल वंठल सब तौल के दे देंगे। मैं आ रहा हूँ अपने उड़न खटोला से बर्तन धोने के लिए। 5 रुपया दे देना चॉकलेट खाने के लिए, दादा रे दादा। 5 रुपये नहीं भैया, हम 10 रुपये दे देंगे, ठीक है। हमारा बर्तन धो दो। लखनऊ में फूल के हिसाब से मिलता है किरण दीदी, गांव है ना लखनऊ गांव। हाँ दीदी, लखनऊ है गांव लेकिन यूपी है ना। आज हमारे भी कुछ कम नहीं हुआ है दीदी, बारिश होती रही। अच्छा चलो, उधर कम कम बारिश तो हो रही है, इधर तो इतना तेज धूप है पूछो मत। नहीं, जैसे गांव में सब चीज गड्डी के हिसाब से, जैसे गोभी है फूल के हिसाब से, यहाँ तो गोभी तौल के देते हैं। नीता दीदी बताओ, गोभी के रुपया फूल मिलता है? सुनीता दीदी, वह आपकी लाइव में क्या क्या बोल रही थी?
हाँ बोल तो रही थी सुनीता दीदी की लाइफ में, मैं भी बात कर रही थी, ध्यान नहीं दी, कमेंट नहीं पढ़ रही थी, इधर बात भी कर रही थी। लक्ष्मी दीदी बता रही थी कि उनका आईडी नहीं बना था, बिटिया ने दोनों में एक ही आईडी बना दिए। नहीं दीदी, वो बोल रही होंगी, मैंने भी पूछो गीता दीदी से, उस दिन वो क्या बोलते हैं अंजलि दीदी भी थी, मैंने इतना आवाज लगाई, इतना आवाज लगाई, एक बार भी नहीं बोली, कमेंट आता था, उसके बाद फिर गायब हो जाती थी, आधा आधा घंटा तक उनका कमेंट नहीं आता था। 1 घंटा में 3 या 4 बार कमेंट करके गई थी, बस दो दो तीन तीन कमेंट, बस ऐसे। अब इतना आवाज लगाई, ऑन है कहाँ है, एक बार भी नहीं बोली है। एक ही दिन नहीं, रोज जब आती हैं तभी आवाज लगाती हूँ। देहाती दीदी राधे राधे बड़े बड़े। आज तो मेरा सुबह से वाईफाई बंद था, तो किसी लाइव में गई भी नहीं हूँ। मैं तो किसी को आवाज भी नहीं देता हूँ, सिर्फ भरोसे के ऊपर रहता हूँ। जब से यह आना शुरू हुई है, मेरा नहीं तो टाइम नहीं पॉइंट। नहीं, आवाज इसलिए लगाती हूँ भैया, जैसे कोई किसी कमेंट नहीं आ रहा, काफी देर तक कमेंट नहीं आ रहा, तो आवाज लगाना पड़ता है, कौन है कहाँ है, ना बताएंगे भी नहीं कौन हूँ कहाँ हूँ। बस कमेंट आएगा 2-3, उसके बाद कमेंट नहीं आता, तो आवाज लगाती हूँ हाँ कौन है कि नहीं होना है। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपको दिखा दूँ, आप देख लेना। म्यूट हो जाओ। मैं तो खुद कहती हूँ भाई, जिसके पास टाइम नहीं है कमेंट करने के लिए, ईमानदारी से ऑन रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कान तो ऐड भी नहीं आता, फिर भी मैं नहीं कहती हूँ कुछ। ऐड वाला ऑप्शन नहीं आता है, ऐड नहीं लगता, जो अपने से आता है ऐड वही आता है। क्यों नहीं लगता पता नहीं भैया, वो जो ऐड वाला ऑप्शन है ना, वो आता ही नहीं है। ऑप्शन नहीं आता है, तो अंजलि दीदी से कहा था, मैंने कहा वीडियो कॉल लगा करूंगी उसे इंस्टाग्राम से, तब देखना एक बार। फोन भी नहीं करी उनके पास, ऑप्शन ही नहीं आता। जब डॉलर वाला निशान करूंगी ना, पूरा एकदम वहाँ नीचे एकदम जो होता है जहाँ ऐड वाला ऑप्शन आता है, वो पूरा सिंपल रहता है, और जो सेव वाला होता है वो काला से वाइट हो जाता है, मतलब ब्लैक होता है ना, वाइट हो जाता है, पता नहीं क्यों। उसे टच करते ही काला दिखेगा 1 सेकंड के लिए, फिर वो सफ़ेद हो जाता है। बीके भैया, जब तक ऊपर वाला लाइक करने वाला रहेगा तब तक ऐड नहीं आएगा, जो नीचे वाला ऑप्शन लाइक वाला आता है तो ऐड आता है।
उसमें देख लिया करो, आप जल्दी चलाया चलाया करो तो फिर एक दो बार, अगर नहीं चलेगा तो फिर चलाओ तो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। और दीदी के में देखो वाचिंग तो कभी कभी ऐसा हो जाता है यूट्यूब की तरफ से नहीं देखा, और कभी कभी हो जाता है कि बहुत से लोग ऐसा करते आईडी निकाल लेते हैं। हाँ दीदी सही बात। सुनीता दीदी आज तो मैं 5:45 पर चलाई थी। सुनीता दीदी तुम उनको सपोर्ट मत, सुनीता दीदी तो और जाती हैं, दो दो आईडी लगा देती हैं। मैं 5:30 से शुरू करूँगा, आपको फालतू टाइम देकर आया करूँगा। अगर आप बताओ, मुझे जाकर बताओ कि भैया एक नहीं आ रहा। हमारे कैम ऑप्शन नहीं आता, अभी दिखा रही हूँ मैं इसलिए मैंने कहा इंस्टाग्राम पे कॉल करके बताऊंगी। देखना बी के भैया हमारा लाइव देखना, जहाँ से मैं ऐड लगा रही हूँ। देखना भैया, देखो जब ये मैं ऐड लगाती हूँ ना, देखो ऐसे ही आ जाता है ये नीचे देखो पूरा ये सिंपल आ जाता है। ये जो ऑप्शन आता है नीचे ये नहीं आता। अब इसमें ऐड लगाए कहाँ, यही नहीं समझ आता। ये देखो कुछ नहीं आएगा। डॉलर का भैया ये देखो, डॉलर का निशान पे टच किया है, उसके बाद ये आ रहा। डॉलर के निशान टच किया है भैया, तब ये आ रहा। हाँ साफ नहीं दिखेगा भैया, मुझे पता है। मुझे साफ नहीं दिख रहा है। अगर आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरे फोन में दिखा दो तो मैं अब फोटो खींच के दूसरे फोन में साफ स्क्रीनशॉट लेके रखी थी, मैंने डिलीट कर दी। इंस्टाग्राम पे भेजी थी अंजलि दीदी के वाले पे, कह रही है मुझे सही दिख रहा। जब आप जब लाइव चलाते हो यूट्यूब पर दीदी तो वह
हाँ भैया, जब लाइव चलाते हूँ ना तभी की थे, तब भी नहीं होता। ओरिजिनल करती हो इस फोन को, उसमें लाइव पर घूमने का ऑप्शन आता है और फोन में नहीं घूमता है। हाँ, जिसमें कर रही हूँ उसमें घूमता है, ये जो दूसरा वाला फोन है इसमें ना घूमने वाला नहीं है। इसमें दूसरे वाले में चालू करके देख रही थी, इसमें भी नहीं चालू हुआ। ये देखो, जैसे ये है भी स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। ये इसे खाली लाइव पे टच किया है तो ये ऐसे आ रहा। अब जब मैं इसे डॉलर पे टच करूंगी, देखो ये डॉलर पर टच कर दी ना, ये देखो फिर ऐसे ये सिंपल से आ जाएगा। और राइट लगाने वाला ये नीचे होता है, जहाँ सिंपल आया है वाइट। अब यहाँ आइट लगाने वाला वही नहीं है। दीदी मैं तो बता देता है, आप मेरे इंस्टाग्राम पर एक फोटो भेज देना, मैं बता दूंगा, मेरा आईडी लिख लो। ठीक है भैया, भेजो अपनी आईडी। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट में ले लीजिए है, लिख के भी रख दिया है। मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, उस पर गाना लगा है, घूंघट मेरा जब उठाएंगे, गाड़ी का पोषण उठा रहा हूँ, उस पर मेरी आईडी है। अच्छा भैया, ठीक है भैया, ठीक है।
थैंक यू अंजलि दीदी, राधे राधे। हो गया सपना दीदी के सपोर्ट कर लें दीदी। ठीक है, सभी लोग ऑन रहो, काम करते रहो, मैं भी काम कर लूँ अपना। पूरा दिन बीत जा रहा है इसे, रक्षाबंधन भी आ गया, फिर काम लग जाएगा उसमें। राम राम लाइटन, थैंक यू भैया लाइटन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भैया, राम राम। ठीक है, मंजू आई थी, अभी नहीं आई है भैया। आज मैं लाइव देर से चालू की हूँ, 1 घंटा हुआ लाइव चालू किए, आज अभी नहीं आई हैं। क्यों देर से चालू की? आज भी वाईफाई हमारे रिचार्ज खत्म हो गया था, और वाईफाई वाला देर तक सोता है। 11 बजे पहले उठते ना है हम। मैसेज किए थे तब भी नहीं करे, फिर फोन लगाए तब जाके रिचार्ज किए हैं। ध्यान नहीं हुआ करना, नहीं एक दिन पहले ही रिचार्ज करवा लेते हैं। सोची आज 4 तारीख है, आज 4 खत्म होगा, मतलब रात में, वो सुबह ही खत्म हो गया। फोन लगाए हैं 11 बजे, 11:30 ऐसे 11 कुछ बज रहा था, सो ही रहे थे वो। और भैया खाना पीना हो गया है? अभी मंजू दीदी गई होंगी वहाँ पे सपना दीदी वाले में।
किरण दी मैं सो रही हूँ, थोड़ी देर बाद कमेंट करूँगी। दो फोन ऑन है। ओके ठीक है दीदी, सो जाओ, सो जाओ, रात भर पहरा दो और दिन में सो खूब आराम से हमारी तरह। हमारे फिर रात में नींद नहीं आते और दिन में जब पढ़ूंगी तभी सो जाऊंगी। ठीक है दीदी, बोल रहा हूँ। नमस्ते। खाली हो गया, खाली हो गया। अब भाग, देखो अब जा रहा वहाँ पे, कपड़ा उतार लो पहले और उससे भागेंगे। किरण जी आप कौन सा जिले से हैं? हम यूपी जौनपुर जिले से हैं भैया। वहाँ गए मंदिर। मम्मी दूसरी बैंडेज लगाए दो, ये निकल ली इसकी चेपी। बार बार मैं हाथ धोने जाता हूँ, बार बार इसमें पानी चला जाता है अपने आप ही। अब टिफिन निकाल दे दो, और उसका भी अपना भी है। धो रही हूँ। थैंक यू मंजू दीदी, राधे राधे। ऐड आगे रहे, सुनाई दे रहा है। 1:45 पर दोनों आईडी लगा दिया है। ठीक है दीदी। हाँ ठीक है भैया, ठीक है, आ रही है सभी लोग।
रखा वाला तो बैंडेज दे दो। दूध रखा था वाला हाँ कॉफी बना दी कॉफी में क्या कॉफी खा सब पी गई हैं? मंजू का 2 आईडी आ गई है किरण जी। हाँ भैया देख रही हूँ, आ गई है मंजू दीदी की 2 आईडी। मैं आधा घंटा कर देता। ठीक है ठीक है। गीता दीदी आप भी काम कर लो दीदी, आपको भी काम पड़ा है।
लेके आ गया तो फिर मोबाइल खोले। ये तो हैंग हो ही रहा, उसे भी हैंग करवाना है। हाँ भाई ये बर्तन धो रही हूँ। आज अभी हमारा बर्तन नहीं धुल रहा। ठीक है बीके भैया।
एक आ रहा है। थैंक यू दीदी। और देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
बाय बाय बीके भैया। आई हो दादा, क्या हुआ अनु भैया? आधा घंटा कंप्लीट। बाय 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 भैया, बाय बाय। आज लगता है मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। क्या हुआ भैया अनु भैया? सॉरी दीदी, भूल गया था 2:25 पर निकलेगा तो मेरा 4 घंटा पूरा हो जाएगा। 3 आईडी से 20-20 मिनट और 3 आईडी से 3 घंटा पूरा। अच्छा भैया ठीक है। लगता है मुझे बड़े बड़े झगड़ा करना पड़ेगा। कर लो भैया खूब झगड़ा। रक्षाबंधन आ रहा भैया, झगड़ा मत करो अनु भैया। त्योहार आ रहा, झगड़ा मत करो। नहीं दीदी लोग उड़ जाएंगे ना, ऐसे ही रहोगे बिना रक्षा के, बिना राखी के। अनु भैया देख लो कितना चालू है। रक्षाबंधन आ रहा है इसलिए झगड़ा मत करो। हम भाई लोग झगड़ा कर लेंगे तो फिर कैसे गिफ्ट, अच्छा वही झगड़ा, गिफ्ट कैसे मिलेगा, इन्हें गिफ्ट कैसे मिलेगा, इसलिए हाँ। हाँ भी के भैया, और क्या, झगड़ा कर लेंगे तो गिफ्ट कैसे मिलेगा, इसीलिए झगड़ा मत करो। जब रक्षाबंधन बीत जाएगा तब झगड़ा करना खूब, बड़ा बड़ा वाला। रक्षाबंधन आता है, मिठाई खाकर फरार हो जाना है कि यहाँ घूम कर देखना है, गिफ्ट देना है दादा रे दादा। अच्छा, मिठाई खाकर फरार हो जाओगे? बहनें तो लालची होती हैं, भाइयों को लूटने के लिए सबसे पहले दो, उसके बाद में रक्षाबंधन, और क्या। पहले तो क्या होता है, क्या मिलता, क्या दोगे तभी बांधेंगे रक्षाबंधन, यही होता है ना। दीदी अब मैं ठीक है भैया। अनूप भैया तो इतना बड़ा भी पेड़ दिखाएंगे चढ़ने के लिए, जिस पेड़ पे चींटी भी चढ़ेगी तो पेड़ गिर जाएगा।
तो रही हो दियाती दीदी। वीके भैया बहनों का मांगती है कि हमको इतना दे दो। फिर आ गए मोबाइल चलाने। देहाती दीदी मांगे ना भाइयों से। भाई ऐसे नहीं देंगे तो बहनें मांगेंगे तो है ही। जब अपने से नहीं देंगे तो मांगना ही पड़ेगा। जब अपने से दे देंगे तो खुद ही नहीं मांगेंगे। दीदी हमारे बारिश हो रही है, कम आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा दीदी, आप सबके यहाँ इतना बारिश हो रही है, हमारे यहाँ इतना तेज धूप है। हमारे यहाँ दीदी बारिश थोड़ा से उठान हुआ है दीदी, बादल बहुत तेज घिरे हुए हैं। अच्छा हाँ, आप ही सबके यहाँ बारिश हो रही है बढ़िया से। छोटे भाई से कोई नहीं मांगता है, या जबरदस्ती कहाँ का है दादा। दादा अच्छा, भाई तो भाई छोटा हो चाहे बड़ा, देने लायक होना चाहिए बस भाई। अगर छोटा भाई है नहीं देने लायक रहेगा तो खुद ही नहीं मांगेंगे। कल भी सोच रही थी गाने के लिए लाइट चला गया, आज भी नहीं गा पाए दीदी, शाम को लाइट आया। अच्छा, लाइट भी भाग जा रही है। हाँ बारिश होती है वैसे भी भाग जाती है। आज दीदी 10 रुपए दे के काम कराई हूँ, नहीं तो बिटिया नहीं सुन रही थी। 10 रुपये ले लो, काम कर लो, काम खत्म हो गया हमारा। अच्छा, नहीं छोटे भाई से कोई नहीं मांगता भैया, पर तो छोटे भाई अपने दे देते हैं अपनी खुशी से। हाँ, अनु भैया डरो मत, कुछ नहीं मांगेंगे, ऐसे ही बांध देंगे। जानवी से बोले तो कमेंट करो 5 रुपया ले लेना। नंदनी से बोले ना 10 रुपए ले लो, ला घर का काम करवा लो। अच्छा, अपना कमेंट कर रही थी वह जानवी थी दीदी, दोनों से जल्दी जल्दी पैसा किनारे कमेंट कर रही थी लगा। लाना दिलाओगी तो करेंगे ही। हो गया हमारा भी काम, झाड़ू पोछा लगा ही था, रसोई भी साफ करी थी, बर्तन भी धुल गया। बर्तन इतना गंज जाते हैं कि पूछो मत। अभी नीचे बर्तन नहीं जाए हैं, नीचे नीचे बड़ा है, कौन जाए लेंगे। अब बाद में जब लाएंगे बच्चे तब धोंगे। मैं जाऊँ लेते आऊँ नीचे से। अनूप भैया कल तो लाइट नहीं चलाए थे ना, क्यों नहीं चलाए थे? तो दीदी आपके 15 रुपए चले गए गीता दीदी, और आपको मिले कितने थे आज? हाँ गीता दीदी, आपको कितने मिले थे?
बाय बाय अनु भैया, ऑनलाइन चालू करोगे ना? कल तो देख रही थी चालू ही नहीं किए थे। गीता दीदी कहाँ चली गई? गीता दीदी आज कितने मिले थे बताई नहीं। लिख रहे थे नहीं दीदी, हमको तो कुछ नहीं मिला था दीदी, जो पहले मिला था वही बांट दिए हम दीदी। कभी कभी हमको भी मिल जाता है ना, जब जब मैं जब जेब में चेंज रहता है दीदी तो मिल जाता है 10-20। अच्छा 10-20 चेंज रहता है तो मिल जाता है। आज हमको काम करने में देर हो गया ना दीदी, देना तो इसलिए हम कहें, और थोड़ा सा पैसा रखा हुआ था तो लड़के। हाँ काम ना करो तो तब भी देना पड़ता है दीदी, खाने के लिए कभी कभी दिए जाते हैं। हाँ सही बात है, बच्चे खाने के लिए तो मांगते हैं। हमारे तो दिन भर खाते रहते हैं। सुबह तो आएगा, स्कूल से पहुँचेंगे तब लेंगे लेंगे, नहीं तो ट्यूशन चले जाएंगे, फिर ट्यूशन से आएंगे फिर जरूर मांगेंगे, फिर लेंगे। वो भी हम तो देते नहीं हूँ, नहीं इसके पापा ही देते हैं। मम्मी पापा देते हैं अपना, इनके दादी दादा खरीद खरीद के रखे रहेंगी, चीज देंगी चाहे पैसा देंगी। हमें सबको नहीं देना पड़ता। सही बात है दीदी, हमारा जब प्रिंस रहता है ना घर पर तो एक एक दिन में 50-50 का जाता है। दुकान पर खाएगा वह अलग दीदी, और वह ले जाएगा, और वह कुछ कोई कुछ वही तो दीदी।
कभी कभी मैं देती हूँ, मैं तो नहीं देती। परसों दी थी 20 रुपया दोनों को 10-10। नहीं तो मम्मी देती हैं खाने पीने के लिए। किसी किसी दिन स्कूल जाने के लिए वो करेगा तो मम्मी कहेंगे ये ले लिए 10 रुपये, जा नौटंकी दिन दिखा सुबह सुबह। तब जाएगा लेगा, फिर आगे कहेगा मुझे 10 रुपये चाहिए, मुझे 10 रुपये चाहिए, करता रहेगा। हमारा कमेंट नहीं दिख रहा क्या किरण दीदी? किरण दीदी हमारा दिख रहा है। गीता दीदी पढ़ तो रही हूँ, आवाज नहीं जा रही, क्या लग रहा? नहीं दीदी, पहले बहुत खाती थी ना, तो डॉक्टर को दिखाए थे, रोशनी को, तो बोल में अच्छा बोले आती में इन्फेक्शन हो गया है, दुकान पर के खाना मत खाने दो, तो कहीं 10 दिन में, हफ्ते में 1 दिन में देती हूँ पैसा बस। अच्छा सही है दीदी, खा देना तो नहीं चाहिए, वैसे भी खिलाना नहीं चाहिए दुकान के चीज, लेकिन हमारे जो मम्मी है ना मानती नहीं है, मना करते हैं पैसा मत दिया करो चीज खाने के लिए, मगर दे देती हैं। कहेंगी बच्चे हैं बच्चे हैं। दे देती हैं, बच्चे अपना वही लाएंगे खाएंगे। अब देखो स्कूल गए हैं, स्कूल से आए हैं, कुछ नहीं खाए, सीधा बैग उठाए हैं, ट्यूशन में गए हैं, अब आएंगे ना बस दादी दादी करेंगे वही पर उनका सर खाएंगे, फिर पैसा देंगे, खाना तो खाएंगे नहीं, ऊपर आएंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे, वही उनका दिमाग चाटेंगे, पैसा दो दादी, पैसा दो दादी, ये लाऊंगा दादी, पैसा दो दादी, वो ये लाऊंगा वो लाऊंगा करते रहेंगे, तो फिर पकड़ा देंगी पैसे। तो सही है दीदी, हमारे घर पर तो दोनों लोग बहुत खा लेते हैं। हमारी लड़की जो है तो जो विदाई पाई रहती है अपने रखेगी, अपना रोल ले जाएगी, 10 रुपया 20 रुपया, 10-20 रोज खाती है। अब बाकी जो अपने दादी से लेगी वो अलग। हमें लगता है हमारा जो गीता रॉयल वाला आईडी है वह नहीं दिख रहा था क्या किरण दीदी? उसमें कौन सा ये आईडी? तो कमेंट पढ़ रही थी, गीता रॉयल वाला आ गई है क्या? अच्छा गीता रॉयल वाला कमेंट नहीं दिख रहा ये। ना मंजू दीदी, गीता रॉयल वाला नहीं दिख रहा। उसपे ब्लू नहीं था ना, इसलिए गायब हो गया होगा। हाँ दीदी, गीता रॉयल वाला तो नहीं हमको भी दिखा। हाँ वो उस पर ब्लू नहीं था ना, वो गायब हो गया होगा। कोई हाइड कर दिया का दीदी? हम वहीं से कमेंट कर रहे थे। नहीं गीता रॉयल वाले पर ब्लू है दीदी, ऑफिशियल वाले पर ब्लू नहीं है। अच्छा हाँ गीता रॉयल ऑफिशियल वाले पर ब्लू नहीं, पता नहीं दीदी, हो सकता है एक मंजू दीदी के आईडी से कमेंट डिलीट हुआ है, पता नहीं उनका कमेंट डिलीट हुआ है, आपका हाइड हुआ है, पता नहीं, हो सकता है हाइड हुआ होगा, मैंने भी ध्यान नहीं दी, ध्यान इधर था मेरा, बर्तन हो रही थी ना, आधा ध्यान इधर था। बीके भैया हैं कि गए? बीके भैया कह रहे थे मेरा 2:25 पे हो जाएगा। बाय बाय तो नहीं दिखे हैं ना बीके भैया के?
बीके भैया, बीके भैया आवाज आ रही है? पता नहीं, म्यूट नहीं है भैया। 4 1 घंटा देना, हमारे पास 2 ही फोन है, एक फोन देते ही नहीं है सपोर्ट करने के लिए। उनका मांगोगे तो कहेंगे पागल दिख रहे हो ना। अनूप भैया बाय बाय। अनूप भैया नहीं, दीदी बीके भैया पूछ रही हूँ। बीके भैया कह रहे थे 2:25 में मेरा हो जाएगा 4 घंटा। अब 2 ही आईडी है, एक आईडी देते नहीं है, उसका पासवर्ड भी नहीं जानती हूँ कि चुरा चुरा के लगा दो। पासवर्ड ही नहीं बता रहे हैं। अब 2 घंटा तो उनकी लाइव चलती है, 2 घंटा 2 फोन से 4 ही घंटा तो हो पाएगा। बीके भैया दूसरे वाले फोन से। दीदी आपको ऐसा मैसेज रुका हुआ है, शायद वह क्या सही करो। नहीं दीदी, मैसेज नहीं रुका है, मेरा कमेंट नहीं हाइड की थी, पर किसी का हाइड नहीं दीदी, क्योंकि कुछ गलत लिखा गया था। अच्छा कुछ गलत लिख रहा था इसलिए डिलीट करी थी। बाय बाय बीके भैया। एक बार टच करके उसको सही करने वाला बीके भैया बाय बाय कर रही हैं दीदी। हाँ दीदी बीके भैया बाय बाय कर रही हैं आप। आईडी बदल के गीता रॉयल वाली से कर रही हूँ, देखो दीदी किस दिखता है कि नहीं आप बताना। ठीक है दीदी। बाय बाय बीके भैया। कितना हुआ भैया? 4 घंटा। अभी तो नहीं आया दीदी आपकी आईडी। हाँ दीदी अभी तो नहीं आया। नहीं आया है गीता दीदी, आपका आईडी नहीं आया वो वाला। नहीं आया है, लेकिन हाइड भी हुआ दिखा तो नहीं हाइड।
किसी का आईडी हाइट होती दिखती ना, नहीं दिखा है। देहाती दीदी हमारी आईडी दिख रही है, ये वाली की नहीं दिख रही है, सिद्धार्थ वाली में तो दिख रही है, अब दिख रही है। और गीता दीदी अब दिखी है ये वाली आईडी तुम्हारी, अभी दिखी है, इससे पहले नहीं दिखी। ये पहला कमेंट आया है इस आईडी से। हाँ नहीं आया है, ये 2 आईडी लिखी हो, यहीं से आया है। गीता दीदी जो आईडी लिखी हो ना, हाँ यहाँ से आपका कमेंट दिख रहा है। इसी के कमेंट के ऊपर है दीदी, गीता रॉयल वाला कमेंट नहीं दिख रहा है दीदी, किसी के में इसमें तो दिख रहा है गीता दीदी, दिख रहा है। अब आया है गीता रॉयल वाली आईडी। हाँ तो उसके ऊपर कमेंट होगा दीदी, सपोर्ट आईडी से लिखना, उसके ऊपर होगा गीता रॉयल वाले कमेंट सब दिख। हाँ दिखा है, अब आया है कमेंट उससे। थैंक यू अंजलि दीदी। सो ले दीदी, सो कर उठ गई है लग रहा है। ठीक है दीदी, ऑन रहो।
थैंक यू दीदी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किरण दीदी वाला फोन ऊपर रख रही हूँ। ठीक है देहाती दीदी, रख दो ऐसे दीदी, रख दो दीदी, आराम कर लो। मारे भी नींद आने लग गई अब।
से तड़प
थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी, राधे राधे। किसका है ये? लाइफ स्टाइल एंड ब्लॉग। किसका चैनल है दीदी? राज भैया तो नहीं है। थैंक यू सभी को, लाइफ स्टाइल एंड ब्लॉग। थैंक यू भैया दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ स्टाइल दीदी, और बताइए कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ दीदी। जीवन का चैनल है। अंजलि दीदी, जीवन का चैनल है। जीवन कैसे? जीवन का चैनल। और दीदी आप भी लाइव चलाती हैं? आप मुझे भी टाइम दे दिया करो जी। ठीक है दीदी, आपका लाइव का टाइम क्या है? वो तो सही है दीदी। लाइफ में जीवन ही तो होता है। नाइट में 9 बजे? ओ बाप, नाइट में तो आईडी ही नहीं खाली रहती दीदी। 2 आईडी हमारे पास है। 2 आईडी, एक अंजलि दीदी के में लगा देती हूँ, एक गीता दीदी के में, फिर उनके में से 11 बजे खाली होता है, गीता दीदी वाले में से। एक बार करती हैं दीदी खाली लाइव 9 बजे, बाकी तो पूरा दिन खाली रहता है उतने समय। दिन में 12 से 12:30 तक हो जाता है, होता है। ठीक है दीदी, फिर दिन में सपोर्ट कर दूंगी मैं। दिन में कर दूंगी दीदी, दिन में तो खाली रहती है आईडी। 12 से 2:30 तक होता है। अरे दी, मैं 5:30 से ही जगी हूँ, इसलिए सपना दी लाइव में ही सो रही थी। अच्छा दीदी, 5:30 बजे मैं भी उठी दीदी। लाइव वो हमें लग रहा है ना 5 बजे का अलार्म लगा रखी थी, वो जो आवाज होती है ना उसको म्यूट कर देती हूँ, इसलिए हमें लग रहा है घंटी नहीं बजती। अलार्म की घंटी बजी हमारे उठने के बाद।
ऐसे गीता दीदी परेशान हो जाती थी। रात में मैं अलार्म लगा के रखती थी, इनका भी रात में चलता था ना, ऑन करके रख देती थी म्यूट करके। उसके बाद हमारा अलार्म बजता ही नहीं था। क्या लिखी है दीदी? 12 से 2 बजे तक चलती है, कभी कभी भी आ जाना। ठीक है दीदी, ठीक है, आ जाऊंगी। हमारे वीडियो पर कमेंट छोड़ देना, फिर मैं आपको वहीं ज्वाइन कर लूँगी, तभी तो आऊँगी। नहीं चलो ठीक है, ये एक आईडी है मेरे पास, इससे मैं ज्वाइन कर ले रही हूँ आपको। ये जो मान्य पटेल के नाम से जा रहा है, मैं आपको इससे जब तक ज्वाइन कर ले रही हूँ, इस आईडी से। मैं भी अलार्म लगा के रखती हूँ दीदी, मेरा भी तो म्यूट आता है पर मेरा तो बजता है। पता नहीं दीदी क्यों नहीं बजा। बजा है, बाद में बजा है, बजा है 5:41 पे। हाँ, 5:30 बजे उठी हूँ, उसके बाद बजा है। जब भी तो लेकिन म्यूट था, म्यूट जब भी था जब बजा है। क्योंकि जब उठी हूँ तो वही चार्ज में लगा दी, दोनों फोन चार्ज में लगा दी। अच्छा से नहीं लगा कभी, पता नहीं। आप कितनी लाइव करते थे मोनो करने के लिए? अरे दीदी मैं तो लाइव करती ही नहीं थी, मैं तो काफी दिन तक लाइव करी ही नहीं, उसके बाद से लाइव शुरू करी हूँ। मोनो नहीं हुआ था उसके बाद, मतलब एक ही बार करती थी, फिर जब वॉच टाइम घटने लग गया फिर हमें करना पड़ता था इसे, दिन भर में 1 बार 2 बार, कभी कभी इसे चालू करके छोड़ देती थी। हाँ तो टाइम गड़बड़ कर दी होंगी। अब दीदी 5 AM करके रखी मैंने, अब कहाँ से गड़बड़ हुई पता नहीं। मेरा 3 घंटा हो पाता है। मोनो कैसे हुआ? मोनो दीदी फिर मैं लाइव चालू करी, मेरा वॉच टाइम बहुत घटता था, फिर कई कई घंटे के लिए सपोर्ट करने के लिए छोड़ देती थी, सबको सपोर्ट करती थी से 2 घंटा 3 घंटा, तो वैसे सब लोग सपोर्ट कर देते थे, तब हुआ है। आपका 12 घंटा हो रहा है दी, ओके ठीक है दीदी, ठीक है।
मैंने इस साइड से आपको सपोर्ट कर दिया है। तो दीदी एक दूसरे जुड़ जाओ, जैसे आपके पास टाइम हो, आधा घंटा 1 घंटा सबको सपोर्ट कर दिया करो। बाकी आपको सब सपोर्ट कर देंगे। थैंक यू दीदी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू दीदी, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।
21 दीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किरण दीदी आपको मेरा प्रणाम। खुश रहो भैया, मस्त रहो, जहाँ रहो अच्छे से रहो, अपने कामों में व्यस्त रहो। पूनम आंटी के में आए। अच्छा अच्छा, पूनम आंटी के मैं लाइव सुना रही हूँ। ठीक है राज भैया, कोई बात नहीं है। अब बंद करने वाली थी भैया, मैं चालू करी हूँ और कोई बात नहीं। 3 घंटा हो गया मेरे लाइव। आपको कल ज्वाइन किया था आंटी जी। लाइफ स्टाइल दीदी देखो, राज भैया आपको ज्वाइन किए हैं, आप भी उनको ज्वाइन कर लो। रिटर्न कर दो दीदी। दिल्ली आता हूँ, मिलता हूँ दीदी। अच्छा भैया, आओ भैया। आओ भैया, हम दिल्ली में हैं। दिल्ली में कहाँ है दीदी? दिल्ली में भैया कौन से एरिया में बताए, कहीं आए हो घूमने टहलने? आए तो होंगे ही। हम सब जहाँ रहते हैं पुरानी दिल्ली है भैया, पुरानी दिल्ली जमुना पार। इंडिया गेट आया हूँ। अच्छा, अक्षरधाम भी। अच्छा
अच्छा चलता है भैया, हाँ अक्षरधाम है ये भैया हमारे साथ के पास में ही। खाना खाने जा रहा हूँ दीदी। अच्छा भैया जाओ खा लो। खा लो भैया जाकर। लाइफ स्टाइल दीदी आपका चैनल मोनो नहीं है अभी? आपके चैनल पे सब्सक्राइब तो है, मोनो नहीं है दीदी। नहीं बहन, अच्छा। नहीं तो सबको अपना मतलब ज्वाइन कर लो, अपना आधा घंटा 1 घंटा जैसा टाइम हो वैसे सबको सपोर्ट कर दिया करो, सब आपको कर देंगे, हो जाएगा। अभी ज़्यादा बाकी है? वॉच टाइम ज़्यादा बाकी है का दीदी? जैसे ज़्यादा देर के लिए लाइव चलाओ। मैं अभी लाइव करने लगी हूँ, मुझे पता नहीं था। अच्छा
1 मंथ हुआ। अच्छा, 1 मंथ चैनल बनाया हुआ है कि लाइव करते हैं? लाइव को हुआ 1 महीना चलाते हुए। लाइव करते हुए। अच्छा, चैनल बनाए हुए कितने महीने हुए? कैसे 1 साल के अंदर अंदर पूरा हो जाता है ठीक है, नहीं तो साल भर बाद वॉच टाइम कटने लगता है। जो पहला वाला वॉच टाइम रहेगा वो कटता जाएगा। हम तो बहुत परेशान हुए थे वॉच टाइम के लिए। हमारा साल भर पूर्ण हो गया था। हमारा एक एक बार में 50-50 घंटा काटता था। एक साल से ज़्यादा हो गया है। पहले मैं शोर डालती थी। अच्छा, हाँ 1 साल से ज़्यादा हो गया होगा तो फिर वॉच टाइम भी कटेगा। फिर जो वॉच टाइम मिलता है ना, पहले वाला जो मिला होगा वीडियो में, वो एक एक दिन का करता जाता है। जैसे आज का आपका मतलब जितने दिन से चैनल बनाई है, आज 1 साल आपको पूरा हो गया, कल से आपका दूसरा साल चालू हो जाएगा। तो उसमें से पहला वाला दिन का जो वीडियो बना होगा, जितना वॉच मिला होगा वो कट जाएगा। फिर दूसरा दिन इधर चालू होगा, दूसरे दिन वाला कट जाएगा। ऐसे ऐसे मैं बहुत परेशान हुई खुद, तब जाके लाइव चलाना शुरू करी, तब हुआ। वो भी बहुत मेहनत के बाद। मेरा तो 1,500-2,000 वॉच टाइम कट गया था। 1,500-2,000। तो उतना पहले सोचो, एक एक करके इतना इकट्ठा करी थी वॉच टाइम, फिर घट गया पूरा। तब आपका भी वॉच टाइम बहुत कम होगा अभी, क्योंकि लोग वीडियो पढ़ता नहीं था, शॉर्ट पढ़ता है वही। ओ माय गॉड। हाँ, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा मतलब कि लॉन्ग वीडियो डालो, जल्दी होता है। अगर व्यूज आ गया सही तो जल्दी वॉच पड़ता है, नहीं आता फिर वही परेशानी उठाते रहो। हमारे भी चैनल का है 2 साल हो जाएगा अक्टूबर में बनाए हुए, अब जाके मोनो हुआ है। शॉर्ट से वॉच टाइम नहीं मिलता है, इसलिए वॉच टाइम अभी शुरू हुआ है। अच्छा, हाँ वही तो कह रही हूँ। किरण दी, मैं अपनी बेटी को खिला रही हूँ इसलिए कमेंट नहीं कर रही हूँ। कोई बात नहीं दीदी, खिला लो बच्चों को पहले। मेरा 1 मंथ में 400 हो गया है। अच्छा,
400 भी अगर हुआ है तो आपको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 4000 चाहिए होता है वॉच टाइम। क्या अंजलि दीदी, रावण है आराम से, खाती नहीं है। क्या हुआ, परेशान कर रही हैं? रावण बना रही हो बच्ची को। मैंने कहा चल रही वीडियो बनाऊंगी, वीडियो ही नहीं बना पाई, नींद आ रही, बस सोने मन कर रहा हूँ, सो जाऊँ आराम से। बोल देना आप मुझे ज्वाइन करने को, जिसको वॉच टाइम चाहिए। ठीक है दीदी, यहाँ तो सबका चैनल मोनो है। बाय बाय गीता दीदी। सच्ची में दी बहुत परेशान करती है। परेशान तो करती हैं दीदी, बच्चे परेशान ही करते हैं। वो देखो हमारा एक लग रहा मोबाइल मिला है, इसे छुप के देखो। हाँ, इधर आप देखो, अपने बुक मोबाइल मांग के ला के देखो, कोने में बैठ के अपना गेम खेल रहा है। बाय 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 गीता दीदी, बाय बाय। अच्छा दीदी, एक गाना डालने का टाइम मिले तो गाना, नहीं तो रंजी दीदी का चालू कर दिया। ठीक है दीदी, डाल लो गाना। हम तो बैठे हैं, गाना भी नहीं बना पाए, तैयार हुई होते तो बना भी लेते का। अच्छा ठीक है। आप यहाँ किसी मेन चैनल भी नहीं है ना, ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे पहाड़ मुझे खिलाना लगता है। सही बात दीदी, छोटे बच्चे खिलाना भारी पड़ता है, खाते तो है नहीं सही से, परेशान और करते हैं। ठीक है गीता दीदी, कोई बात नहीं दीदी, निकाल लो आईडी। बाय बाय, डाल लो गाना। अब बंद करूँगी मैं भी। चलो बाय बाय दीदी, बाय। ठीक है, मैं आपको कल से सपोर्ट कर दूंगी। 9 बजे टाइम नहीं है ना, तो कर देती, आईडी खाली नहीं रहेगी, दिन में कर दूंगी। दिन में मैं किसी नहीं करती हूँ, दिन में खाली रहेगी। बाय बाय दीदी, बाय बाय।
बंद कर दूं अंजलि दीदी अब? 4 बज गए दीदी। अगर सपोर्ट करना होगा तो फिर ऐसे चालू रख दो, नहीं तो फिर बंद करके रख दो। मेरा समझ नहीं आ रहा, आप सो वीडियो का बन पाएगा? 4 बज के चाय बनाने का टाइम होने वाला है। अब चाय बनाओगे, यही समस्या है एकदम। बीच में तैयार हुई होती तो बना लेती एक आध गाना, तैयार ही नहीं हूँ।
थैंक यू मंजू दीदी, अंजलि दीदी। अंजलि दीदी आराम कर लो दीदी, ऑन छोड़ दो ऐसे, सभी लोग ऑन रहो। थोड़ी देर और चला रही हूँ, बंद कर दे रही हूँ। कह रही हूँ दीदी ऑन छोड़ दो, बच्चे को देखो अपना, सो लो आराम से। थोड़ी देर चलाओ और बंद कर दो। खिला लिया है, अब काम कर रहे हैं, तो काम कर लो दीदी। छः तक चलने दो किरण दीदी, क्योंकि मेरा तो टाइम उतारना है ना। अच्छा, कोई बात नहीं दीदी, उतरता रहेगा धीरे धीरे। गला दबा दी तो आज मेरा। अच्छा, कोई बात नहीं दीदी, इसे आन छोड़ दो, चल रहा है चलता रहेगा। लेकिन हाँ, ये खाए 5 बजे से मैं उनका अनूप भैया की इससे सपोर्ट कर दूंगी, दूसरे वाले फोन से। दो आईडी, एक 35 पर लगाई थी और एक आईडी 240 पर लगाई थी, तो आप जोड़ना।
हाँ वो है। ये प्रैक्टिस करें मान लो सीधा 1:30 बजे से जरूरत रही है। 1:30 बजे से मान लो 2:30, 3:30, 4:30, 2:30, 3:30, 4:30, साढ़े 4:30 बजे दीदी आपका दोनों आईडी से 6 घंटा हो जाएगा। 4:30 बजे जाना 6 घंटा हो जाएगा 2 आईडी से। और जो 2:40 पे लगाई हैं 3:40, 4:40, 4:40 पे 2 घंटा उससे हो जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा। 4:30 बजे 2 आईडी से और 1 आईडी से 4:40 पे। वाह वाह क्या बात है, जोड़ लिया। हाँ गलत जोड़ा है क्या दीदी? 6 2 8 घंटा तो हो जाएगा, गलत जोड़ा है क्या? नहीं सही है। अच्छा ऐसे हंसी आ रही है। हंस लो खूब। हमको बहुत दिक्कत लगता है, इसलिए राइट टाइम पर सब आईडी लगता है ना तो सही रहता है। हाँ दीदी ये बात तो सही है। सब देखती हैं 2 घंटा 10 मिनट बताएंगे, 4 घंटा 15 मिनट बताएंगे, ऐसे 25 मिनट बताएंगे। ये सब हमें खुद ही बहुत अजीब लगता है। 10 मिनट 5 मिनट बता बता के जाएंगी। 10 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया। मतलब जोड़ने में हमें दिक्कत नहीं होती, जोड़ लेती हूँ, लेकिन जो ये 10 मिनट 5 मिनट क्या फायदा है? ऐसे बढ़िया सीधा सीधा हिसाब रहे, सही रहे। हमारे पास पहले तो एक ही आईडी थी, लेकिन मैं जिससे कहीं जाती थी अगर 1 घंटा 10 मिनट मेरा हो गया तो मैं 1 घंटा बताती थी। लेकिन वही लोग हमारे लाइफ में आते थे, 1 घंटा 5 मिनट हो गया, 1 घंटा 10 मिनट हो गया। मैंने कहा ये 10 मिनट 10 मिनट मैं जोड़ती नहीं हूँ। मैं जब कभी मेरा कम भी रहता है ना, कहेंगे अभी 10 मिनट बच गया है,
मैंने कहा मैं कम करके आती हूँ, मैं तो जोड़ती नहीं हूँ, और आप लोग पूरा पूरा हिसाब लेती हैं। तब मैं भी वही बताने लग गई, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ये 10 मिनट 5 मिनट। हाँ चलो ज़्यादा है, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, चलो बता दो। इसलिए हमको भी गुस्सा आता है, कितने लोगों का टाइम में मैं छोड़ दिए हैं इसी के चलते। हाँ सही बात है। बस 5 मिनट बिना पूरा हिसाब लेंगे कैसे, पूछो ही मत। मैंने तो कहा मेरा भले एक ही आईडी है, अब मेरा मोनो नहीं हुआ था नहीं, मैंने कहा मैं खुद ही वैसे ही कर दे रही हूँ, 1 घंटा 2 घंटा। अब उतना दिक्कत नहीं रहता, कोई सोचती हूँ ईमानदारी से करे इंसान, 1 घंटा 2 घंटा मैं उसे वैसे ही सपोर्ट कर दूँ। अब कितने लोग मैं देखती हूँ आईडी लगाएंगे, जिसके लाइव में जाएंगे उसके लाइव में से निकाल निकाल के दूसरे के वीडियो पे कमेंट करते रहेंगे, और अपने वही लोग, जो लोग दूसरे के लाइव में से वीडियो निकाल के कमेंट करते हैं, वही लोग अपने लाइव में चिल्लाते हैं कमेंट नहीं आ रहा, कमेंट नहीं आ रहा, कमेंट नहीं आ रहा। सभी लोग कमेंट कर दो, सभी लोग कमेंट कर दो। और लाइव में रहेंगे, कमेंट आईडी निकाल निकाल के रख लेंगे, पता नहीं किस लिए, कहीं दूसरे की वीडियो देख रहे हैं, कहीं किसका देख रहे हैं। मत सपोर्ट करो भाई, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा कम सपोर्ट करो, दूसरे वीडियो ही देख लो, क्या ज़रूरत है किसी लाइव में से निकाल निकाल के देखना। एक है आपको, एक है पता होगा, मेरे लाइव में एक और सुनीता नाम की आई थी, पता है वह एक फ़ोन में कई आईडी बनाएगी और सबके लाइव में जाएगी, बोलेगी ऑन है, ऑन हूँ, आईडी चेंज कर करके कमेंट करती है। अच्छा हाँ दीदी करती होंगे। बताओ। हाँ वो जो कहती हैं, हाँ पता है कि जो पहले बोलती थी मैं सुनीता दीदी नाम है, वही उनका नाम है। सुनीता दी बुलाती हूँ, सुनीता दी बोलती हूँ। और ना वह कितने लाइव में पकड़ी गई, मैं भी पकड़ ली थी उसको, बहुत
बेइज्जती हुआ है। मैं तो एक ही बार मेरे लाइफ में आई आई तो मैं पहचान गई, उसको तो छोड़ दिया। अच्छा दीदी, बताओ क्या फायदा फिर। और जो लोग नहीं जानते हैं ना, तो सारे लोग जाते हैं उसके लाइफ में और उसका वाचिंग बहुत ज़्यादा चलता है। अब बताओ तो कौन से इंसान कितना सपोर्ट करेगा। सही बात है दीदी। और इसका 30-35 का वाचिंग चलता है, हम देखे हैं। कभी कभी मन करता है जाकर उसके लाइफ में बहस करके आए। अच्छा, हम लोगों के आँख में धूल झोंकती है। हाँ वही तो मैं कहती हूँ, इतना इतना लोग देखो, देहाती दीदी सपोर्ट करती हैं। और आपका भी हो गया, और सपना दीदी भी हो गया। ऐसे कई लोग हैं 4-4 5-5 आईडी सपोर्ट करते हैं, लेकिन उतना वाचिंग नहीं दिखता है। देहाती दीदी बहुत सपोर्ट करती हैं। वो 4 फोन है, 4 बहुत सपोर्ट करती हैं, लेकिन उनका भी वाचिंग उतना नहीं आता। सच्ची में गुस्सा आता है। सही बात दीदी, इसलिए मेरे ये दोनों फोन खाली पड़ा रहता है। मैं भी किसी सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं कहूँ, यही सोच रही हूँ, अब पहले मैं जान लूंगी हाँ कौन सही ईमानदारी सपोर्ट करता है, उसको ही पकड़ूंगी। क्योंकि भैया मैंने कहा मैं ईमानदारी सपोर्ट करूंगी, ईमानदारी से सपोर्ट लूंगी। आपके पास टाइम नहीं है, कमेंट मत करो, आज छोड़ दो, 10-5 मिनट कम करो, मैं उसके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन ईमानदारी से कहो, करो। नहीं तो यहाँ तो बोल दो भाई आन रहो, उसके फायदा उठा लेंगे, आईडी निकाल लेंगे, क्या फायदा। अब मैं कहाँ, एक आपका, एक मंजू दीदी, एक गीता दीदी, एक देहाती दीदी, यही 3-4 जने सपोर्ट करती हूँ। और पी के भैया आने लग गए। पहले तो करती थी, छोड़ दिए थे, क्योंकि हमारे पास एक ही आईडी थी, मैं और सुबह सुबह उठना पड़ता था, लगा नहीं पाती थी। सुबह तो मैं उठती थी, लेकिन बच्चों को तैयार करती थी ना, तब मेरे ऑटो क्लिकर नहीं चलता था, हाथ से करना पड़ता था। मैंने कहा भैया मैं कर नहीं पाऊंगी हाथ से सुबह सुबह। तो आप जना आ रही हैं 2-3 दिन से, तो उनको सपोर्ट करने लग गई। हाँ दी, सही बात है, मैं वही बोलती हूँ। भले कमेंट ना करो, लेकिन फ़ोन ऑन रहना चाहिए। हाँ वही बात है, जिसको मतलब सपोर्ट करो, 1 घंटा 2 घंटा ईमानदारी से सपोर्ट करो।
अब जिसको आज बीके भैया बोल रहे थे देखो, मेरे भी लाइफ में आती है, मैं कितना बुलाती हूँ इतना बुलाती हूँ, बोलती नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए आवाज़ दूंगी, नहीं बोलती है। सबका माइंड आएगा, उनके कई माइंड भी नहीं आता, आइड भी नहीं लिखेंगे। आइड जब लिखेंगी, जब कोई नहीं लिखेगा तब लिखती हैं। कह रहे मैंने कई आईडी बना रखी है उसी नाम से इंसान कैसे कई आईडी बना लेगा। आईडी ये फोन में रहेगा लेकिन अलग अलग रहेगा। हाँ, उसे बोले हैं इंस्टाग्राम पर मुझे भेजना, स्क्रीनशॉट लिया है ना तो भेजेंगे। अच्छा, हाँ वही तो। अगर उसके जगह पर मैं रहती ना दी तो पक्का हमसे लड़ाई होता। उससे और उसकी ऐसी की तैसी मैं करके आती वहां से। एक फ़ोन में आईडी रहेगा लेकिन फ़ोन तो वही रहेगा ना, तो कैसे हो पाएगा बताओ आप। वही तो। एक फ़ोन रहेगा और आईडी दो रहेगा तो दो जगह कैसे सपोर्ट हो पाएगा, एक ही जगह होगा। वही तो। अगर एक आईडी है, दो कितनी आईडी कितनी भी हो, फ़ोन एक है तो एक ही जगह सपोर्ट हो पाएगा। आप आना, हम लाइव में अपने बताएंगे हम कैसे आईडी चलाते हैं। अच्छा। हमारे फोन दीदी, मैंने अपना आईडी जैसे लॉगिन किया है मेन वाला, तो उस दिन बल्कि मैंने किसी सपोर्ट नहीं की, वीडियो डाली। हाँ, मैंने अपना वीडियो डाली, वही दीदी के लाइव चालू हो गया। देहाती दीदी की आईडी बदली नहीं, उसी आईडी से मैंने देहाती दीदी के दोनों फोन लगाई, दोनों कमेंट करने लग गए। मैं कह रही हाँ, ये दोनों एक ही आईडी जा रही है। फिर मैं चेंज करी। और जब मैं आईडी देख रही हूँ ना, चेंज की हूँ, लाइव नहीं दिखता है। जब वही आईडी फिर उसमें देखती हूँ ना तो लाइव उसमें भी हुआ रहता है। यही नहीं समझ पाती हूँ, अगर जैसे दोनों उसी आईडी से सपोर्ट करेंगे तो उसको क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ फ़ायदा मिलता भी होगा कि नहीं। हाँ, होता है। हाँ, जैसे मेरा फ़ोन, दोनों फ़ोन में आईडी है, मैं उसी आईडी से दो जने सपोर्ट कर सकती हूँ। लेकिन मैं करती भी नहीं हूँ, कहती हूँ मतलब अब दो फ़ोन में भले है, लेकिन जो देखेगा वो कहेगा कि मतलब हाँ, उनका सपोर्ट कर रही है, उनका कर रही है। नहीं मिलेगा। हाँ वही तो, इसलिए मैं तो करती नहीं हूँ। और जब इसलिए तो आईडी बनवाई हूँ, क्या जरूरत है उसी मेन से करने का। भाई आईडी है तो दूसरे आईडी से कर लो।
कल बल्कि गीता दीदी के में थी, मैंने कहा अपना मेन आईडी ले आऊँ उसमें, उसे शशिकला दीदी के जोड़ने के लिए नहीं ले आई। मैंने कहा जाने तो अंजलि दीदी के लगा है आईडी, तो इसमें फ़ोन में भी है, बदलनी पड़ेगी। मैंने कहा जाने तो कल उनके कहीं दूसरा लगा दूंगी, फिर वो वाले ले आऊँगी इसमें। मैं आप ही की आईडी, हाँ आप ही की लाइन में चेक कर रही थी। मैंने जैसे उसी मेन वाली से आपका मेक लगाई थी दूसरे वाले फ़ोन में, उसे भी ले गए, देख रहे हैं उसमें भी लाइक हुआ है, उसमें भी हुआ है। मैंने कहा उनको आईडी से किरण बहन कब तक लाइव चलाएंगे आप? मंजू दीदी कुछ पता नहीं है कब तक चलाऊंगे। अंजलि दीदी बोल रही हैं और अब तक तो बंद कर देती मैं। अब मैंने ना दीदी इसीलिए मैंने तो आईडी बना ली, एक दोनों में जना मेन वाली दोनों में है, और दो दो आईडी और बना ली। लेकिन दो फोन है तो जिसके कम लगाती हूँ आईडी भले चेंज आती है, वही एक एक आईडी मतलब दोनों में लगा देती हूँ। लाइक करना होता है भले आईडी चेंज करती हूँ, नहीं तो वही चलता रहता है। मंजू दीदी आप हमारे ऊपर बढ़ा रही हैं दीदी, 4 घंटा से ज़्यादा मत बढ़ाना, नहीं तो फिर 2 घंटा आप लाइव चलाती हैं, 2 घंटा में मेरा 4 ही घंटा हो पाएगा दोनों आईडी से। अब सही लोग मिल जाएंगे 2-3 तो सपोर्ट करूँगी, क्योंकि अभी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ मैं, थोड़ा कुछ डॉलर वॉलर बने, गूगल पिन उन आए हमारा भी। वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ, न लाइव सही चल रहा है। मैं सोच रही थी लाइव टाइम चेंज करूँ, 4 बजे करूँ तब करूँ, लेकिन 4 बजे बीच में सब और सब चलाने लग गए हैं। और इतना समय सोच रही वीडियो बना लूँ, वीडियो भी नहीं बनाई। अब आराम से आके लेटी हूँ, अभी चाय समय वही को जा रही चाय बनाने। 5 बजे पहले पहले मैं चाय बना लेती हूँ, मोबाइल के चक्कर में अब 5 बजे के बाद भी बनाती हूँ। कहीं 5 बजे बनाने जाऊँगी, कभी पहले चली जाऊँगी, कभी बाद में जाऊँगी।
अरे यार, बात करने के चक्कर में मेरी रावण बेटी है बाथरूम में जाकर पूरा धोने वाला साबुन सारा पोत पात के फेंक गई। अच्छा इसलिए ज्यादा मैं बात नहीं कर पाती हूँ कहीं। क्या करोगी दीदी, बच्चे ऐसे ही परेशान करते हैं। पोत पात के फेंक के भाग गए हैं। बाथरूम में टॉयलेट के बहाने जाती है और नहाने लगती है। अच्छा, ऐसे मारा है ये छोटे वाले से जो बड़ा वाला है वो वाला लड़का भैया इतना परेशान करता था, इतना परेशान करता था। ठंड में भी वो अब ये जाता था बाथरूम में, पानी भर भर के अपनी सारा ऊपर ही डाल लेता था। अब मैं कपड़े बदलते बदलते थक जाती थी। एक तो ठंड है, इतने इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, उसी में और बना बना के रख देता था। उसी के बहाने गई थी और पूरा साबुन पोत कर फिट हो गई। बहुत परेशान करते हैं। ऐसे हमारा भी बहुत परेशान करता है, वो अब भी करता है परेशान। पहले से फ्रिज रखी रहे, फ्रिज के ऊपर चढ़ जाए, होल्डर में हाथ डाल दे, करंट मारे, फिर चिल्लाए खूब तेज। फ्रिज के ऊपर चढ़ चढ़ के बैठता था। कहीं उस होल्डर में हाथ डाले, कहीं खटके का जो वो होता है प्लग लगाने वाला उसमें उंगली डाल ले, जब करंट मारे फिर चिल्लाए। उसने बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया उसने। एक बार ऐसे चाबी लेके घुसोड़ रहा, फ्रिज की चाबी लेके उसी में घुसोड़ रहा, फिर करंट मारा, फिर चिल्ला बहुत तेज की। उसका नाम बताओ, रावण रखे हैं, रावण। रावण बेटी। हाँ, सब वैसे हैं दी, क्या करोगे। मेरा बेटा भी वैसे था, अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा सुधर गया। हाँ, वैसे थोड़ा बहुत ये भी सुधरा है, और ये भी बहुत ऐसे इतना ज्यादा परेशान था, इतना ज्यादा परेशान थे, इससे सब पूछो मत। दीपावली के दिन ऐसे मम्मी दिया जला जला के रखी थी सारे घर में, जो ये लरी वरी सजाते हैं ना, सारे में पानी डाल दिया, ये मग्गम भर 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 के ले जाके सारे दिया में पानी डाल दिया। मम्मी कह रही अभी दिया में सारे जलाई हूँ, कैसे बुझ गए। गई देखे तो मग्गस पानी डाल रहा है। अरे दी बहुत परेशान करती है, और तेज बोलो तो मारने लगती है कुछ भी उठाकर। अच्छा,
इसके शैतानी के चक्कर में एक बार ऐसे ही मग्गम भर भर के पानी डाल रहा था। मम्मी लाई थी बथुआ, ठंडी का महीना था, हाँ बथुआ लाई थी, बथुआ सरसों पालक, हाँ सब चीज लाई थी। मैं उसे धो के रखी, मैंने कहा इसे काट लूं और उसके बाद बनाऊं। मैं बैठी काटने के लिए, मग्गम भर 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 के पानी ला रहा था। फिर गए बाथरूम में पानी लेने, मैंने कहा इसे दरवाजा बंद कर दे रही हूँ, इसके पापा आ रहे हैं। बाथरूम से निकलेंगे, लैट्रिन में गए थे और क्या, मैंने कहा निकलेंगे अपना खोल देंगे, और मैं बंद कर दी और ये फट से अंदर से कुंडी लगा लिया। वो खोल रहा था, उससे कुंडी लग गई, तब छोटा था। अभी 3 साल की है, इसलिए बुद्धि नहीं है अभी। वही दीदी ना, उसने कुंडी लगा लिया। अब आए कह रहे तूने बंद कर दी, तूने बंद कर दी, देख कुंडी लगा लिया, कैसे खुलेगा, लोहे का दरवाजा है। अब तोड़ने में भी जल्दी नहीं टूटता। फिर पापा मम्मी सब लोग आए, अब मैं खुद ही डर गई, मैंने कहा अब सुनाएंगे हमें सब। पापा आए, हथौड़ी हथौड़ी लेके सब तोड़ने लग गए, तब गली बोली सब लोग सब जुड़ गए। अब मैं डर रही हूँ, अब उसे वो पापा मेरे मतलब तोड़ने में लग गए, और सब मतलब उसे बुला रही हैं, कारो ऐसे कुंडी खोलो, ऐसे खोल, ऐसे कर, वैसे कर, करते करते इधर से तोड़ रहे थे, जब जना कैसे कैसे खोला है। उसके बाद उसके पापा पहले से सुना रहे थे, फिर पापा बाद में बिगड़े हैं जब खोल निकलने के बाद। और एक बार ऐसे उसे नहला दी रात में, गर्मी में जैसे रात में नहाते हैं सब, तो मैंने 10 बज रहा था, 10 बज रहा था, हाँ सब खा पी के लेट गए थे, और इसके पापा अपना बाहर चले गए रोड पे घूमने। मैं एक बड़े वाले को नहला दी, मैंने कहा जा तो अंदर रहो, मैं इसे वाले छोटे वाले को नहला दो, फिर लेके आ रही हूँ। वो अलमारी से कपड़ा निकालने गया तो अंदर चढ़ के निकाल रहा था, अंदर मतलब अलमारी में घुस के अलमारी सहित अपने ऊपर उल्टा लिया, पूरी अलमारी सहित गिर गई उसके ऊपर, और कपड़ा इतना साड़ी भारी भारी थी, सारे से उसी दब गया था एकदम से। अब मैं चिल्लाते हुए दौड़ी खूब तेज से, फिरारी बगल वाले आए, हमारे जीजा भी आए ऊपर से, दीदी जीजा सब आए, तब उठाए। डर के मारा भागा इतना तेज से निकल के, पूछो मत। बहुत जान लो, वो बहुत परेशान किया है, बहुत ज्यादा। अब भी परेशान करता है, जब तक सही रहेगा। मतलब उसके अंदर वैसे चंठाई थी, उससे चैन से बैठा नहीं जा रहा था, एक जगह कभी नहीं बैठता था कि एक जगह सही से रहे आराम से। रात में सोता रहे, इसको पैर रात में सोता रहे, 12 बजे 1 बजे 2 बजे कितना भी टाइम मतलब रहे, उसकी आँख खुलती थी और घर में से निकल के भाग जाता था। अब मैं रात में जब जगती थी उसको ढूंढती थी, आरव किधर गया, आरव किधर गया। पता चला जाऊं देखूं, कहूँ जीने में जाके उधर बैठा रहे, कहूँ बरामदे में उधर, कहूँ ऐसे बैठा रहे। तब इसकी बुआ कर रही इसका पैर बांध के रखा करो, ना किसी दिन जीने में जाके गिरेगा। कितना मजा आया ना दीदी। हाँ मेरा लड़का अब 8 साल का हो गया है अगस्त को, लेकिन दिन में कभी नहीं सोता है, दिन भर परेशान करता है, और रात में वैसे ही 12-1 सोता है। 12-1 बजे ऐसे तो अभी है, दिन में सोता ही नहीं है, इसीलिए मम्मी और सब परेशान रहेंगे। नीचे मम्मी सोती रहेंगी, ऊपर उसकी बुआ सोती रहेंगी, यहाँ मैं रहूँगी। यहाँ तो हमें जगाएगा जगाएगा, जाएगा नीचे दादी दादी पास, ऊपर पहुँच जाएगा बुआ बुआ करते। दीदी चिल्लाएंगी तो फिर से कहेगी वो सोता नहीं है, मैं सबको भी सोने नहीं देता है। और रात में भी नहीं सोता, परेशान करता है। नहीं दीदी, सारे बच्चे का वही हाल है, कलयुग है वही। कलयुग है, सही बात है, लेकिन ये ना कह रहे ना बड़ा वाला ना हमेशा इसके चंठाई रहती थी, हमेशा एक बार भी ना ढंग से रहता था, एक बार भी, चाहे जहाँ रहे, ऊपर नीचे सबको परेशान करता है वो। पूरी दोपहरिया ऐसे इधर भाग, इधर लड़ाई, उधर झगड़ा, उधर करता रहेगा। वो सामने मारे पढ़ाती है ट्यूशन,
हमें सबको नहीं डरेगा, जब वहीं से बुलाएंगी ना तब शांत होगा, थोड़ी देर शांत रहेगा बस उसके बाद फिर वैसे हो जाएगा। उनको ही डरता है। बहुत चंठा था ये। मतलब एक लड़का मतलब एक बच्चे वैसे बदमाशी करते हैं, इसके जैसे वो नहीं है पूरा पाती हो बच्चे कि हमेशा ही चंठा ही रहे उसमें खैर। हाँ यार, मेरे सर पे है वैसे वही तो कह रही हूँ। और उन्हें ऐसे इसी के चक्कर में उसका ये दरवाजे से उसका ओठा ही पूरा बीच का फट गया था, नीचे वाला हिस्सा पूरा अलग हो गया था। और उसको गए रात में, रात की बात थी, पार्टी में जा रहे थे सब तैयार होके, पार्टी में कौन कहे सब लेके लेके भागे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में तागा वो लगाए डॉक्टर, या यहाँ वाले मना कर दिए, फिर वो हॉस्पिटल में ले गए। तब उसने कैसे कैसे लगाया तो घर पे आया, तुरंत ही इसने नोच दिया अपना टाका, नोच के फेंक दिया। ठीक है दीदी। किरण बहन 7 घंटा हो गया है कंप्लीट। ठीक है मंजू दीदी। मंजू दीदी हमारा तो 6 घंटा था, आपका 1 घंटा बढ़ा है ना मंजू दीदी? मेरा तो वही 6 घंटा था, 1 घंटा आपको बढ़ा है। 1:45 पे आईडी लगाई थी। 1:45 पर आईडी लगाई थी, आप जोड़ लेना किरण। वहाँ 7 घंटा कंप्लीट हो गया है। 1:45 5 बज गया है और 30 मिनट मेरे हस्बैंड दिए थे बिल्कुल। कुल मिलाकर 7 घंटा कंप्लीट हो गया है। अच्छा दीदी, आज 7 घंटा हुआ होगा दीदी, 1 घंटा आपको बढ़ा होगा। 6 घंटा हमारा था आपके पास, 1 घंटा आपको बढ़ा होगा। 1:45 पे आई हैं, 2:45, 3:45, 4:45, 3, 3, 6। हाँ हाँ, वो वाला मिला के 7 घंटा हो गया। ठीक है दीदी, 1 घंटा आपका बढ़ गया है, 1 घंटा आपका हमारे पास हो गया है। ठीक है दीदी, बाय बाय। छः घंटा आपका कट गया है, 1 घंटा बढ़ गया है। हाँ वही कह रही हूँ, 6 घंटा कट गया है, 1 घंटा हमारे पास आपका हो गया है। चलो शाम को 4 घंटा करूँगी तो 1 घंटा कटेगा, 3 घंटा बढ़ेगा हमारा। ठीक है दीदी। 5 बज गया, जाऊँ चाय बनाओ। नहीं मम्मी हमारे चिल्लाएंगे भी चाय के लिए, उनको चाय पहले चाहिए, बाकी सब कुछ बाद में। बाबू आओ आओ। और बेटा, आओ बेटा, 1 मिनट।
हाँ? मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? ए बाबू तू तो देख ही नहीं रहे हो। ए, मम्मा कहाँ है? मम्मा मम्मा कहाँ है? पापा कहाँ है? हाँ? बोलते नहीं हो बाबू? बोलते नहीं हो? हमें नहीं पहचान रही हो बाबू? पहचान रही हो? वीडियो बनाओगे? वीडियो हमारे साथ वीडियो बनाओगी? वीडियो हाँ? चल मारे गई, साले गई। तुम तो नहीं बोल रही हो भैया हमसे। का आ रही है, आ रही है, आ रही है मन्नू दीदी आ रही है। मोबाइल चाहिए? मोबाइल 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 ले, मुझे बुला रही है। मम्मी चाय नहीं बना सकती हो तो ना? अब दूध ले देना देना। मम्मी तो नहीं चेते हाँ इसका क्या हो रहा है देखो। हटे हाँ रुको रुको सब रुको लोग जा रहे हैं क्या? हाँ दीदी मम्मी ये देखो इसके सब लोग जा रहे मम्मी ये हैं। देखो ये क्या हो गया? ये जो होती है ना ये जो लास्टिक होती है ना इसके यहाँ पे पूरा जख्म बन गया बहुत दर्द होता है। मानो दर्द होता है हाथ भी नहीं लगाने देते किसी को। इसकी मम्मी देखती नहीं थी, कैसे देखो बनाने देखो देती पीछे थी। कर दिया पता ही नहीं ना वो लाल लाल हो जाता था। बहुत तो दिखते रहता उससे है। नहीं हुआ होगा, उससे होगा जो पंपा से पहनाती थी। हाँ। हाँ दीदी अब सब लोग गए। बंद कर दूं क्या दीदी? बाद में सपोर्ट कर देना दीदी, कोई बात नहीं। आपके लाइफ में जो आते हैं दीदी, जो भी मतलब आते हैं, जो सही सपोर्ट कर रहा होगा हमें भी बता देना दीदी। अब 5 बजे से रहता है, उसके बाद पूरा दिन मोबाइल खाली पड़ी रहती है दोनों। आज तो मान लो इतना देर तक चल गया, नहीं 2 घंटा 3 घंटा मुश्किल से चलता है, तो पूरा दिन मोबाइल खाली रहता है। चलो सबसे पहले चाय बनाऊं, नहीं तो हम यहीं बैठे रह जाएंगे। 5 बज गया, अनु भैया चालू हो गया होगा, उनका भी सपोर्ट कर दो।
अभी नहीं चालू किया। एक आरती नाम की आती है ना, मैं उसको लाइव में 4 से या 5 बजे से आईडी लगाती हूँ और चारों आईडी ऑन छोड़कर सो जाती हूँ। और मेरे लाइव में भी शुरू से जब तक लाइव चलता है तब तक उसकी आईडी रहती है। अच्छा दीदी, लेकिन उसका सुबह में चलता है। अच्छा दीदी, सुबह वाले के तो अब बिजी हो गए। क्या क्या बोलते हैं, बी के भैया के 6 बजे से कितना बजे चल, मैं सुबह से बी के भैया का रहता है 6 से 8 ना। हाँ, उसके बाद देहाती दीदी कुछ पता नहीं रहता, कभी 8 चला लेती हैं, कभी 9 चलाती हैं। उनके लक्ष्मी के वही जाती थी, लक्ष्मी दीदी के जो आती हैं, दोपहर में भी चलाती हैं, फिर सुबह में चलाती हैं। लेकिन जिस टाइम में मैं सपोर्ट करती हूँ उस टाइम में आप दूसरे को सपोर्ट करती हैं, यही है। हाँ, वही तो कह रहे हैं दीदी। टाइम वही है पर सपोर्टर दूसरा दूसरा है हम दोनों का। अच्छा, कितने बजे चालू करते हैं चालू? वही 6 बजे का। हमारा जान लो 5 बजे सनू भैया का लगा देती हूँ। उसके बाद वो जो आते हैं राज भैया, उनका तो कुछ पता ही नहीं जाता, 2-3 कमेंट करेंगे उसके बाद चले जाते हैं। फिर भी जाती हूँ, सपोर्ट कर देती हूँ। उसके बाद मंजू दीदी का जैसे निकालूंगी 9 बजे से, वैसे फिर आपके में लगाऊंगी, गीता दीदी के में लगाऊंगी। फिर गीता दीदी की 11 बजे बंद हो जाता है, आपका जना जब तक चलता है ऑन करके रख देते हैं। फिर उसके बाद से आपका आईडी कब खाली रहता है, यह बताओ। अब वही बता रही हूँ दीदी, जैसे इस टाइम 5 बजे अनूप भैया का अगर चलता है तो मान लो एक आईडी तब भी खाली रहेगी, एक आईडी अनूप भैया का लगा देती हूँ। फिर राज भैया कुछ पता नहीं रहता, तब भी लगा ही देती हूँ उनके कैम। 5 बजे से अनूप भैया कैम लगाती हूँ, फिर उनके कैम लगा देती हूँ।
फिर मंजू दीदी के 7 बजे से लगाती हूँ 9 बजे तक, तब जना आपका और गीता दीदी चालू हो जाता है। देख आईडी उनके गए, मैं आईडी आपके में लगाती हूँ। फिर सुबह है 6 बजे और कर बीके भैया कहे में, उसके बाद देहाती दीदी चालू होता है। 8 बजे बीके भैया बंद करते हैं, फिर देहाती दीदी के कभी 8 चलाती हैं, कभी 9 चलाती हैं। बस देहाती दीदी के से बंद करती हूँ, जब अपना चला देती हूँ, उसके बाद आईडी खाली रहती है। एक बजे आईडी अगर लाइव बंद करती हूँ तब भी 2 3 4 5 6 5 6 घंटा के लिए आईडी खाली रहती है। सुनीता दीदी में एक मोटी बेसनल आईडी है, आती है, उनका ज्योति नाम है, उनसे आप जुड़ जाना। उन्हीं के लाइफ में उनका लाइव 4 से लेकर रात 8 तक चलता है। आप उनको सपोर्ट कर सकती हैं और वह अच्छा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मुझे भी उसे सपोर्ट करती थी, पर अभी नहीं आ रही हैं। मैं भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि हम लोगों में थोड़ा सा नाराज़गी चल रही है, लेकिन वह अच्छा सपोर्ट करती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तभी मैं देखी थी ज्योति और साथ पूजा दीदी, 2 जनी आती थी ना, दोनों जनी नहीं जा रही हैं कि एक ही आईडी है दोनों जनी की। एक पूजा दीदी और एक ज्योति दीदी, 2 जनी आती थी आप पे में। हाँ पूजा दी अब लाइव नहीं चलाती हैं। अच्छा दीदी, हाँ 2 दिन से देख रही हूँ नहीं आती हैं, 2 3 दिन से। ज्योति दी आती हैं पर अभी नहीं आ रही हैं, मुंह गुब्बारा हुआ है, उसका पिचक जाएगा तो आएगी फिर। अच्छा, बीके भाई है ना, उसी की बहन। अच्छा दीदी, अच्छा वो जो ज्योति प्रेम ऑफिशियल है क्या?
हाँ और एक हाँ और एक आईडी है मोटिवेशनल, नाम है, देखना आप जाती हैं सुनीता दीदी के लाइव में। हाँ दीदी जान रही हूँ उनको। मोटिवेशनल पर लाइव करती है। होती ऑफिशियल वाला चैनल मोनो नहीं हुआ है, खराब हो गया है। अच्छा दीदी ज्योति वाली चैनल खराब हो गया है। ठीक है, अच्छा दीदी जान लेना। हाँ पहले भी के भैया कह रहे थे सपोर्ट करने के लिए, तो मैंने कहा तब मेरी आईडी खाली नहीं रहती थी। ये बात एक ही आईडी थी, 4 बजे मैं खुद ही लाइव चलाती थी। मैंने कहा भैया मैं कैसे सपोर्ट कर पाऊंगी, 4 बजे से हमारी लाइव खुद चलती है। मतलब टाइम पे कुछ पता नहीं रहता था ना, जब मर्जी तक चलाती थी, देर तक चलता था। 5:40 पर बंद कर देना दी। ठीक है दीदी ठीक है। बी के भाई भी मेरा पुराना सपोर्टर है, पर अभी जो रात में नहीं आ पा रहा है मेरे लाइफ में, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ उसके लाइफ में। अच्छा दीदी
अरे भैया और बताइए कैसे हैं आप। ज्योति दीदी को आप टाइम देंगी 5 बजे से भी ना, तो जितना टाइम देंगे उतना वह कर देंगी आपको। ठीक है दीदी, देखूंगी। हाँ, देहाती दीदी लाइव में जाते हैं। और किसके लाइव में मैं देखी थी अभी? देहाती दीदी लाइव में क्या? अखिलेश भाई, आपका तो यहाँ पर कोई एड्रेस पूछ नहीं रहा है, तो बिना पूछे क्यों लुटवाना चाहते हो भाई? आपके लाइव में जुड़ने का मन नहीं करता है क्योंकि आप कोई कजरी गीत नहीं सुनाते हैं। हम गायिका थोड़ी ना है जो कजरी गीत सुनाए। जब हमें नहीं आता तो हम कहाँ सुनाए। आप हमारे पास हैं क्या जो आप लूटेंगे ब्राह्मणों को? कोई लूट पाया है जो आप लूटेंगे? हाँ, ब्राह्मण तो खुद ही लुटेरा हैं, लूटते रहते हैं सबको। ब्राह्मण को कौन लूटेगा? हाँ अखिलेश भैया, चाय बना रही हूँ, चाय पी लो दीदी भैया सभी लोग। हाँ तो भाई मत आना जब नहीं सुनाती है, अपना काम करना, ठीक है? भाई अब ज्यादा ना फेंको। हाँ, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं प्रतापगढ़ जिले से हैं। हाँ भैया, तभी तो प्रतापगढ़िया बदनाम है। तभी तो प्रतापगढ़िया कुछ और कहते हैं। सही बोली विस्पर। आज से नहीं आएंगे। चाय पी लो भैया, क्या करोगे कजरी गीत सुन के? अखिलेश भैया चाय पी लो। अंजलि दीदी, अखिलेश भैया चाय पी लो, चाय बना रही हूँ, गर्मा गर्म चाय पियो जल्दी जल्दी।
सिवान जिला के बारे में जानते हैं अखिलेश भाई? सिवान जिला अच्छे अच्छे लोग को हिलाते हैं। अच्छा दीदी, सिवान जिले से हैं आप? वहीं से मनीष कश्यप है? नहीं, हाँ वहीं से हैं मनीष कश्यप। गए अखिलेश भैया पूछ लाकर। पूछ उठाकर। हाँ पूछ उठाकर गए अखिलेश भैया। वहीं से है, अच्छा। हाँ अच्छा वहीं से है सिवान से। हाँ वहीं से है, हाँ वही तो कह रहे हैं। इस टाइम सबसे ज़्यादा IAS PCS प्रतापगढ़ जिला दे रहा है। होना लड़ गया है जब कोई जिला प्रशासन स्तर पर प्रतापगढ़ से आगे थे। ये हमारे वहाँ सब भूखे बंगाली बैठे हैं। क्या लिखे हैं भैया? बिहार में कुछ बचा है क्या? अखिलेश भाई एक बार सिवान जिले में जाना कभी, और थोड़ा सा किसी से तेज बोलकर आना, तब देखना आपका हाल क्या करेगा सब। बहुत कुछ है ना, समझो तो कुछ नहीं है। 15 लड़के 3 साल के अंदर खुद हमारे गांव से हुए हैं। खाने के लिए लाले पड़े हैं वहाँ। अरे भैया, वहाँ वाले चोरी करके अपना पेट भर रहे हैं। रहने दो भाई, अब आपका बात ही बड़ा है और कुछ नहीं, आपके बस का नहीं है कुछ। अब फेंको मत ज्यादा भाई। हाँ दीदी, सब अपने अपने जिले का अच्छे ही बताते हैं। ऐसे जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब तो जना प्रतापगढ़ के थे। अगर हमारे प्रतापगढ़ के कोई बुराई कर देता था तब खूब लड़ती थी। हाँ, हमारी दीदी इलाहाबाद में थी, उनका जिला इलाहाबाद लगता है, प्रयागराज।
वहाँ वाले कुछ कहे ना, तो हम सबसे कहूँ कि मतलब कि इलाहाबादिया चोर है, वो सब कहें प्रतापगढ़िया चोर है, ऐसे ऐसे लड़ाई लड़ाई हो जाए। कोई भी कहे कुछ प्रतापगढ़ के बारे में तो जरूर बोल देती थी। ज़्यादा जानते हो तो सिवान जिला का रोने का नाम बताओ। बताओ तो फेंक नहीं रहा हूँ, अपने गांव के लड़कों का नाम दे दूँ, देख लो क्या। जिला छोटा है क्या, आपके बारे में खोजने जाएं। तोड़ा मोहल्ला है कि मिल जाएंगे सब। चाय ले लेता हूँ, जाते हैं। अभी पीसीएस का रिजल्ट आया है, उसमें पट्टी तहसील से देखो कितने लड़के हुए हैं। 37 लड़के पट्टी तहसील से हुए हैं, जिसमें मेरे गांव से 11 लड़के हुए हैं। हाँ जाओ दीदी, बाय बाय कर लो दीदी, बंद कर दूँ। खोज लो मेरे बारे में, मुझे लोग लारा के नाम से जानते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेटर रह चुका हूँ, आप पता कर लो।
अच्छा चलो अंदर कमरे में खेले, कमरे में खेले अंदर। चलो चिज्जी खा के आएंगे। हाँ चिज्जी खाने चलते हैं, चलो चिज्जी खाने आएंगे। बोले नानी हाँ तो निकला है तो अच्छी बात है, पढ़ाई ही तो किया है, सब तो किया है। चाय दे दो पापे हैं। ओके दी, बाय 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 दीदी, बाय बाय। MDPG कॉलेज प्रतापगढ़ से ग्रेजुएशन हुआ है 2012 में। मेरे पास आपके लिए दिमाग नहीं है भाई, मुझे अपना एक 2008 में मेरा मिलिट्री में सिलेक्शन हुआ था। मैं 25 दिन ट्रेनिंग पर था, चला गया, फिर आपके बिहार से गया, रेलवे का एग्ज़ाम दिया, TC। ठीक है दीदी, बाय 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 दीदी, बाय बाय। मैं आपके यहाँ बादशाहपुर रानीगंज पचरास है, एक टीम के खिलाफ खेला हुआ और कोई टीम हमारी टीम से जीत करके नहीं जाती थी गजरिए से। अच्छा भैया, अब भैया हम लोग तो मैच खेलने जाते नहीं थे, जो हमें सबको पता हो। हमारे गांव के लोग जाते थे खेलने, घर के लोग जाते थे। अंजलि दीदी वो हंसी आ रही है, बहुत हंस रही हैं। अरे 5:44 हो गए, देखो मैंने अनु भाई चेक नहीं करी। चलाए भी हैं लाइव कि नहीं चलाए हैं, एक बार चेक करके आती हूँ। ये अनु भाई लाइव चल रही है। ठीक है दीदी, बाय बाय दीदी, बंद कर दे रही हूँ। अनु भैया चल रहा है, एक आईडी लगा दे रही हूँ, पता नहीं कब तक चलाए हैं, देखा भी नहीं, देखो चेक करूँ जरा।
कई बार चेक करी, उसके बाद भूल गई यहाँ बातें करते करते। ये दो आप किसका है? मम्मी ताए 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 थैंक यू राजेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो लाइव बंद करने जा रही थी भैया। और भैया चाय नाश्ता हुआ शाम वाला? नानी नानी बंद कर दो भाई मेरी बहन। बाय भैया, चाय पी लो भैया, बनाई हूँ राजेश भैया। दे दो दे दो भैया, ठीक है भैया, दे रही। जीजू से पूछ लो पहले, जीजू क्या करेंगे?
बना मैं रही हूँ। जीजू मना कर देंगे चाय पिलाने से। इसका मतलब आपकी सरकार। नहीं भैया, मतलब अब किसी को चाय पिलाने से या खाना खिलाने से मना थोड़ी कर देंगे। बहन मेरा कपड़ा मिठाई पैसा भेज दो। हाँ नहीं तो ठीक नहीं होगा। अच्छा भैया। जैसे चाहे मुझको समझना, बस इतना। क्या लिखे हैं इसके आगे? जैसे चाहे मुझको समझना, बस इतना ही। मुझको कहना मांगने की आदत मेरी जाती नहीं है, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं है। अच्छा भैया। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है बहन, बंद कर दो। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, बंद ही करने जा रही हूँ। बाय बाय सभी से। बाय बाय अंजलि दीदी। हाय की गई दीदी। बाय बाय।